Good afternoon. We are in fascinating Sundarban, West Bengal. It's a high noon time. Sky not clear, hazy. Yet we'll try to catch it up. We are in the mangroves with a high tide. You can see the mangrove trees. The high tide is progressing. So the uniqueness of these trees, they remain underwater for 10 to 12 hours during high tides. They have two types of routes, breathing routes and the conventional route with the river Ramganga and merges into the Bay of Bengal in the down south. We will be soon taking this boat just to give you, we'll go up. हम लोग बंगाल के सुंदरबन में हैं विश्वविख्यात बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर्स मैंग्रोव्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड अभी ज्वार चल रहा है शुरू हुआ है तो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है इस पेड़ मैंग्रोव्स के पेड़ हैं 7-8 तरह के पेड़ हैं दो तरह की जड़ें होती हैं एक साधारण जड़ और दूसरी जड़ है सांस लेने के लिए ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं तो थोड़ा हेजी है अभी हम थोड़ा ऊपर जाके जब तक नाव छूटने का टाइम है हम जाएंगे थोड़ा मैंग्रोव को आपको दिखाते हैं देखिए इधर देखिए ये जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं ये ब्रीदिंग रूट्स है सांस लेने के लिए These are the breathing roots. আমরা সব পাথর প্রতিমা সুন্দরবনে আছি মেদগঙ্গা নদীতে ও 18 কাজির খেয়া আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে খেয়া পার করে কুমারপুরের দিকে যাব ততক্ষণ একটু ম্যানগ্রোভ দূর থেকে দেখাই আকাশের অবস্থা ভালো না মেঘলা তাও যতটা পারা যায় This is mud. This is mud embankment. Very unfortunate. The Bay of Bengal, mostly the tidal rivers and many depressions in Bay of Bengal and low tide, cyclones, major, minor cyclones are there. Yet the government's agencies are just neglecting. Obviously, the tidal rivers are subject to soil erosion. Just see the pathetic condition is the mud. And the lakhs of people, millions of people live in hundreds of islands in entire Sundarban. Sundarban enjoyed the two UNESCO heritage tags, largest mangrove in the world and other being the largest wetland. So these two tags are there. Camera settings are a bit disturbed. Let's see, we will have another session. That's the we are going towards the mangrove site, so you can appreciate better. हम लोग अभी मैंग्रोव की तरफ जा रहे हैं नाव छोड़ने में भी कुछ देर है ये देखिए ये जड़ें हैं छोटी छोटी जड़ दिख रही हैं ये सांस लेने की जड़ है ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं ये मैंग्रोव्स हैं पानी में डूबे रहते हैं नौका बहुत विस्तीर्ण इलाका है बाय द वे द मैंग्रोव्स सुंदरबन in undivided India in prior to 1947 unified India
Now it's three countries. The mangroves of the Sundarban are in falling in two countries, Bangladesh and the India. Bangladesh has the larger part, about 60% of mangroves. Sundarban is in Bangladesh and is a deltic Ganges deltic region. I am aware connectivity is very poor here, and the camera setting has defied me, so you are not able to get the better picture. Second session is a day-long visit. We are going across the river Midanga, one of the major rivers of Sundarbans, merging into the Bay of Bengal. Kumarpur, there is a famous on the occasion of Magh Purnima. Major fair is there, festival is there, and you will appreciate this is the major lifeline. That's the lifeline for islanders. So, second session, we'll try to give you better glimpses. Resuming another session will be very risky. Just see the pathetic condition. Still, it is a formal ghat is there. As I travel across the Sundarbans, many places even people have to negotiate mud, knee-deep mud, elderly people, expecting mothers, and others have tough time. Sick people, yet they, it's a way of life, can't help it. अभी ज्वार शुरू हुआ, high tide is in progress, it has just started. Tidal river, Midanga. So this is, as you'll appreciate, the islanders have this is the only lifeline for hundreds of islands, entire Sundarban. So cycle, bike, gas, LPG cylinders, everything. People you move across for a faster. There's a mangrove inside. Livestock is also carried. It's a hazy morning. Let me get on board. Yeah. Yeah, now about to sail out. It's a motorized boat operated diesel, so it's pollution, causing water pollution, air pollution, no denying. Another small boat, dinghy boat, that's perhaps for the fishing is approaching us because of the livelihood and lesser job opportunities. They have to survive on the animal husbandry, marine fishery, fishing, aquaculture. So that's a mangrove trees submerged in the water. थोड़ा ऊपर की तरफ नाव में जा रहे हैं हम, और ये देखिए एक छोटी सी नौका आ रही है. ये मछली का जाल बिछा देते हैं जब लो टाइड होता है, भाटा होता है, और नेविगेशनल चैनल खुला रखते हैं ये लोग, और
फिर जब ज्वार आ जाता है तो फिर धीरे 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 वो मछली जो भी है, फिर जब भाटा आता है तो जो भी कैच उनको मिलता है वो लेते हैं। আমরা পাথর প্রতিমা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাথর প্রতিমা মৃদং 18 কাজী খেয়া মৃদঙ্গমহানা নদীতে ওপারে কুমারপুরে যাচ্ছি, তারপরে আর একটা ব্রিজ আছে নদী পার করে বিষ্ণুপুর আছে। এটা এখানে বসতে পারি হবে। Motorboat has started. Setting out. Now private now भी है, now है सूरज बिल्कुल दोपहर 12 बजने के करीब है, थोड़ा फेवरेबल नहीं है और स्काई भी क्लियर नहीं है, क्लाउडी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि पेड़ डूबे हुए पानी में। वॉट या दैट्स फिशिंग बोट, द 3 people on board winding up their net. Yeah, anchor man was asked me to get they have collected that boat, they have collected their catch, the mangrove thing. But now अभी घाट पर जा रही है। Well, I apologize for the poor visibility and the poor camera sitting, but never wanted to lose the time, precious time, so that you are not robbed of the just get the glimpses. Mangroves far in the bank side, the high tide trees are underwater gradually. Boatman is collecting the air. The far end you can see, I can see 2, 3, the green patch in the corner and left hand side, fishing boats, and 2 in midway. Then walls are floating. It's difficult to locate, but I can see it's a hazy. These are largely the fishing boats. Unfortunate, very unfortunate. Our service in India, our service providers, all the leading service providers, they are all private
in the era of 5G, seamless connectivity. But trust me, soon away from the major cities of the metro, connectivity is very, very poor. Very, very poor. You can't even have a voice call uninterrupted. Leave aside on the video calls. They are robbing the government agencies, the statutory TRAI, COAI, their federation. They are just TR. The revenue earning is the only prime motive. Least bothered about the connectivity. And the small boat is the far end in the middle. So, 20th century when we are technology in our country is 5G, but nothing works. So, very, very poor connectivity. You can't have a Zoom meeting or a video conferencing. You may feel we are in midstream. It's just about 6-7 minutes boat ride. So the question is not a high sea or a wide river. No, that's the plight of the islanders. Narrow channel. We shall be entering this narrow channel. Just there's a small creek leading us to the jetty where we shall be alighting. That's a fishing net. Yeah. On our left, the concrete walls are there. These are mangrove trees. You can see the submerged. Yeah. Now you can understand. There's a high tide, so water plants are. So is the concrete road leading to the jetty. Yeah. We are inching the Kumarpur Ghat. I think another few minutes we shall resume another session. Hopefully we are blessed with a better connectivity and yeah. আপনার কি কেউ আছে? হ্যাঁ আছে। Yeah. There's a forest. We came from, there's a small creek. Yeah. These are the trees. Mangrove trees, small saplings. Of late, certain voluntary organizations and the forest department has planted mangrove. Belatedly, they have tissue. Small snail walking.
mollusk family. Snail space. I'll go till I can walk. You will feel the entire. This is the concrete road touching point. Small in height, yet submerged. Thus, the trees are at times ankle deep water, mud, as well as at times one, two, three. There were four bicycles submerged trees. Let's go. কুমারপুর হতে 18 গাড়ি। That's the frequency and the schedule. 40 passengers, permissible, but no lifeboat. At times, double the number 3 times. They have first service at 5 o'clock from this side, 5:30. Last from this side, 8:10. And the fare. Okay, let's go. I think left hand side against the sun we will have better
Bhagna Park. I have to run away from the jetty, boat part, so that we remain in session. Two local women barefooted going for their work. Still, the sky is not very. That's the yard, the green covered, and the paddy field. Good for irrigation facility. Usually the unfortunate islanders are dependent closer to জগন্নাথ দেবের মন্দির ওই তো মেলায় এসে গেছে yeah we have reached the village fair mela
village here. See the falls. ওই সজন তুমি হাত কাছে সজনবাবুর বাড়ি আপনি সজনবাবুর লোক নাকি আসুন কোথা কোন দিকে কি মন্দিরে যাবো শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন কুমারপুর শ্রীক্ষেত্র রথ মেলা यहाँ এই তো মন্দির ये इस मंदिर का शायद रिनोवेशन हुआ है একদিনের মুখ্যমন্ত্রী মিঠুন মিঠুন চক্রবর্তী ये विशालक्षी मंदिर है। विशालक्षी एक सती पीठ बनारस में है 51 में से जगह जो मेरीन लाइफ समुद्र के लोग हैं द्वीप में तो मान्यता काफ़ी मान्यता है जो लोग मल्ला नाविक हैं यहाँ ये विशालक्षी मंदिर मनसा देवी शीतला देवी की बहुत मान्यता है और बाएं हाथ में जगन्नाथ मंदिर भी है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है अब मेला तो अभी शाम को ही होगा ट्रेडिशनल वेइंग ब्रिज आपको दिखाते हैं तुलसी मंच सनातनियों में तुलसी मंच बहुत महत्व रखता है और बंगाल में एक विशेषता ये है हर घर में ग्रामीण इलाके में तुलसी मंच अवश्य ही होगा मेरे ख्याल से हम तो दोबारा सेशन शुरू करेंगे अभी बहुत अच्छा कवरेज नहीं है ये यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यही we shall soon be ending this session জুনিয়র মিঠুন চক্রবর্তী the folk theaters like Nautanki in northern India then Tamasha in Maharashtra here the folk theater is Jatra Hindi we call it Yatra so the legendary Mithun Chakraborty is now একদিনের মুখ্যমন্ত্রী না মুখ্যমন্ত্রী কি বলুন তো এটা কি লেখা এটা কি মুখ্য না মূর্খ হ্যাঁ একদিনের মুখ্যমন্ত্রী আচ্ছা আমারই উচ্চারণে ভুল হয়েছে মিঠুন চক্রবর্তী দ্য লেজেন্ড লোকনাট্য গাজন তীর্থ বিনাপানি অপেরার একদিনের মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র মিঠুন চক্রবর্তী Please allow us. You have been bearing with us with the frequent interruption at the stage, frequent interruption due to network and the poor visibility. So we'll call it up now. We will soon back whenever sun is blessed. Thank you. Bye bye.